कैसे चल रहा है सबका? ऑल गुड। ऑल गुड। कैसे चल रहा है सबका? ऑल गुड। ऑल गुड। ओके, चलो शुरू करते हैं देन। अगेन द सेम क्वेश्चन गाइस। प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या ये हम? आर वी प्रैक्टिसिंग? यस नो। कल का लेक्चर किसने प्रैक्टिस किया? हु प्रैक्टिस यस्टरडेज लेक्चर? हमने पढ़ा लिस्ट। लिस्ट भी प्रैक्टिस करा रहेगा तो बेस्ट है। हु प्रैक्टिस्ड लिस्ट? ओके। एनीवन एल्स? प्रैक्टिस करो गाइस। तो थोड़ा सही रहेगा, आपको समझेगा भी, आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप होगा। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो, इतना ही बोल सकता हूँ मैं। लाइक इतना इंटरेस्टिंग है ना आगे, तो आपको मजा भी आएगा। अरे अच्छा, ऐसे हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है। जब आप लॉजिकल कुछ चीजें सीखोगे, समझोगे, देन इट विल बी वेरी मच ऑफ बेनिफिशियल। कि जब एक प्रोजेक्ट करोगे ना खुद, तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो वो सही कर दिया। ठीक है, और आगे जाके मतलब आपको ये बहुत ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत है नहीं। मतलब एनीवे एआई आ चुका है जो कोड कर रहा है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कोडिंग की मतलब नीड नहीं लगेगी, बट यू शुड नो कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस। बट प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, सो चलो आज का मैं शुरू कर देते हैं। एक क्विक मैं आपका लिस्ट का प्रैक्टिस ले लेता हूँ, एंड देन वी कैन कंटिन्यू आवर वी कैन कंटिन्यू आवर लेक्चर टुडे। ठीक है, शो माय स्क्रीन। क्या कह रहा है? अवॉइड इन्फिनिटी। अच्छा, एनीवेज आपको सबको स्क्रीन दिख रही है, राइट? एंड आई होप दिख रही है। यस, ओके। तो लेट मी जस्ट, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? नाउ मे बी। ठीक है, लेट्स 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 स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा लिस्ट। ओके, लिस्ट। तो लिस्ट में सबसे पहले देखा मीनिंग लिस्ट की हमने देखा। लिस्ट में हमने ये नोट्स बनाई थी, राइट? एनीथिंग विच इज इनसाइड स्क्वायर ब्रेसेस एंड इज कॉमा सेपरेटेड इज कॉल्ड एज लिस्ट। ओके, तो ये हमने एग्जांपल लिया था, वी टुक दिस एग्जांपल। स्क्वायर ब्रेसेस, राइट? स्क्वायर ब्रेसेस कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज रहेगी, इसके अंदर डेटा रहेगा, एंड those values will be separated by comma. Okay, those values will be separated by comma. Then when we check the type of this, particularly my list, we got to know it's a list. Okay, then we have seen this कि list is a collection of items, और उसके अंदर इतनी सारी चीजें जा सकती है, और इससे भी ज्यादा में भी। ठीक है, क्या क्या उसके अंदर आ सकता है? It can contain string, numbers, list, tuples, set, dictionary, booleans and so on. ठीक है, इसके अंदर फ्रोजन सेट भी जाएगा, और भी चीजें। ठीक है, सो हैविंग सेड दैट कि दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल फ्रेमवर्क। ओके, उसके बाद इट कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, सो हमने यहाँ पर कुछ सारी एग्जांपल लेने की कोशिश की। इट कैन ऑल्सो कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, इट कैन रिटर्न ऑर्डर डेटा। ऑर्डर डेटा मीनिंग जिस तरीके से आपने टाइप करा है उसी तरीके से आपको उसी सीक्वेंस में, इन द सेम ऑर्डर, यू आर गेटिंग द डेटा। ओके, देन वी हैव सीन इट इज अ म्यूटेबल। म्यूटेबल के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कुछ इस तरीके से। सो वी हैव टेकन अ लिस्ट ऑफ comedians, and then someone wanted to replace this
मिस्टर समय, समय का इंडेक्स ले लिया उन्होंने, लिस्ट इज 1 0, एंड उसको रिप्लेस कर दिया राहुल से, ठीक है, एंड नाउ द समय हैज बीन चेंज टू राहुल. इट मीन्स यू व्हाट यू डिड, you just edited that list. Okay, you just edited that list. So this is how you can edit or delete कैसे करना है वो सब आगे देखेंगे. All right, delete and add, append, right? So let's start with today's lecture, that is lecture 10. Okay, इसमें हम देख रहे हैं list functions कह लो या list कह लो, और this is a considering part 2 because some of the pieces we covered yesterday. Okay, some of the pieces that we have covered yesterday. So जो चीजें, कुछ चीजें मैं मतलब फ्रेशली ले लेता हूँ, जैसे लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग इन लिस्ट, ठीक है, इंडेक्सिंग इन लिस्ट. ओके, सो कनेक्टिंग द कर्नल, एक लिस्ट ले लेता हूँ मैं, लेट्स से लिस्ट वो लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1 2 3 की जगह पे मैं डाल देता हूँ 1 3 5, नेम डाल देता हूँ रजत, और फिर से डाल देता हूँ ए, ठीक है, ऐसे कुछ डाल देते हैं, right? Then I'm saying list 1 and I'm getting this as 1. Okay, then yesterday we have seen here, I guess ये login करेगा अभी. So this is indexing हम देख रहे थे. So this is zeroth index, first index, second index, third and fourth index, right? So ये हो गया हमारे positive index, positive इंडेक्स, जैसे सिमिलर वे, ठीक है. पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम देखेंगे लिस्ट ऑफ 0. ओके, अगर मैं ये रन कर देता हूँ तो मुझे 1 आ जाएगा, राइट. इफ आई से लिस्ट 1 ऑफ 1, ठीक है, लिस्ट 1 ऑफ 1 मीनिंग ये 3 आ जाना चाहिए, राइट. 1 3, 1 3 आ गया, राइट. सो सिमिलरली अगर मैं फिर से लिस्ट 1 के अंदर 4 डाल देता हूँ, आई शुड गेट दिस ए आई. ओके, some examples of negative indexing. Okay, negative index क्या रहेगा? So this is -1, -2, -3, -4, -5. Okay, so तो रहे थे suggestions, right? ठीक है, -1, -2, -5. ये -1 है, ये -2 है, ये -5 है. So if I run this, I should get this AI, Rajat and 1. Okay, like this. So कुछ इस तरीके से it's exactly similar to what we have seen in the string. Okay, seen in the string. क्या यहाँ पर वो अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं वो, ठीक है. so this is about indexing, ठीक है, इसको मैं थोड़ा टाइटल बड़ा कर देता हूँ. now understand, let's try and understand slicing, ठीक है, slicing in a list. तो slicing क्या होता है, ठीक है. so हमने काइंड ऑफ वो भी देखा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था. so let's say we had this name that is Bhavan, right? So if we wanted only BAV, Bhav, okay, this word, so we will choose like start index रहेगा 0, okay, then end index रहेगा 4, जो कि A का इंडेक्स रहेगा, ठीक है, A का इंडेक्स रहेगा. Why? Because एक इसके ऊपर सीजर चली जाती है. So it will just cut down this element and आपको ये मिल जाएगा भाव. So आपको बस इतना ध्यान रखना है कि whichever like let's say मुझे V तक या फिर A तक BHA इतना ही इंडेक्स चाहिए रहेगा, इतना ही लेटर चाहिए रहेगा. So what I will do, इसका इंडेक्स ये 2 छोड़कर नेक्स्ट वाला ले लूंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला ले लूंगा. So similar kind of thing यहाँ पर भी वर्क होगा. Okay, similar kind of thing. So let's take the same list. Okay, let's take the same list. And now, for example, I want list 1 में से मुझे सिर्फ नंबर चाहिए. So ये मेरा 0th एलिमेंट है, राइट. So 0 से स्टार्ट होगा एंड एंड कहाँ पे होगा, 1 2 and 3 पे एंड होगा. So I will write 3 here.
तो व्हाट विल हैपन, ये रजत नहीं पकड़ा जाएगा, बस ये 1 2 3 लाइक 0 1 2 तक पकड़ा जाएगा. सो नाउ इफ आई रन दिस, आई विल गेट ओनली दीज थिंग्स. ओके, आई विल गेट ओनली दीज थिंग्स, राइट. और हमने और एक फंक्शन पढ़ा था, दैट इज लेन, राइट. लेंथ ऑफ लिस्ट 1 अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5. इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5. ओके, इसके अंदर कितने एलिमेंट, 5. ऑलवेज इफ यू वांट द एंटायर लिस्ट, किधर गया, इफ यू वांट द एंटायर लिस्ट, आपको बस ये करना है, लिस्ट ऑफ, ये भी कर दोगे तो आपको एंटायर लिस्ट मिल जाएगा, राइट, जैसे कि वैसे. तो स्टार्टिंग यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी मैं लिख देता हूँ ऊपर, लिस्ट, लिस्ट नेम, स्क्वायर ब्रेसिस, देन स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा, देन सेमी कोलन रहेगा, देन एंड इंडेक्स रहेगा, ठीक है, एंड इंडेक्स, इंडेक्स. ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग के स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स रहेगा. कुछ इस तरीके से ही कर रहे हैं, राइट. हम ये स्टार्ट इंडेक्स है 0 एंड 3 इज आवर एंड इंडेक्स. ओके, 3 इज आवर एंड. यहाँ पर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, सो इट ऑटोमेटिकली कंसिडर स्टार्ट इंडेक्स 0 है, ठीक है. हाँ, मैं यहाँ इसी के नीचे और एक सेल बनाता हूँ. इट ऑटोमेटिकली कंसिडर एंड इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, एंड एंड इंडेक्स क्या रहेगा, एंड इंडेक्स रहेगा लेंथ ऑफ योर लिस्ट. मेरा लेंथ ऑफ माई, व्हाट इज माई लेंथ ऑफ लिस्ट, is 5, right, is 5. If I run this, I should get again entire list. So this and this is exactly same. Okay, this and this is exactly same. Okay, so now one more question, one more example. Okay, so ये मेरी लिस्ट है, राइट. इसके अंदर कुछ नंबर्स है, कुछ words. For example, I want these words only now, as of now. If I say list 1, okay, list 1, so उसके अंदर I will say 3. Okay, 3 क्या रहेगा, रजत, like this is 0, first, second, and this is third. Okay, and now if I just type colon, if I don't type anything, I will get everything. Like 3 के बाद जितना भी रहेगा वो सब दे दो. Okay, and similarly अगर मैं कुछ इस तरीके से भी लिख दूँ, 3 length of list of 1. Okay, यहाँ पर basically 5 रहेगा, ठीक है. If I run this, I will get similar example, ठीक है, this and this. Okay, this and this. Alright, and इसी के अंदर और एक मतलब एडिशनल कॉन्सेप्ट है, स्टेप साइज. ठीक है, स्टेप साइज हम किसको कंपेयर करते हैं, मिस्टर मारियो. ओके, स्टेप साइज हम किसके साथ कंसिडर करते हैं, मिस्टर मारियो. तो स्टेप साइज कैसे रहेगी, फॉर एग्जाम्पल, one wants to join. Okay, coming back to the, ओके, स्टेप साइज क्या रहेगी, हमने ये भी सिमिलर चीज पढ़ी थी. ओके, लेट्स से ये आपका लिस्ट 1 है, ठीक है. लिस्ट 1 कुछ इस तरीके से, इंस्टेड ऑफ दैट इसके अंदर लेट्स से आपको सारे ही एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो आ जाएंगे. आप स्टेप साइज डाल सकते हो, लेट्स से अगर आपने 1 डाल दी तो अगेन सारा ही आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द थर्ड एलिमेंट हियर इज स्टेप साइज, ठीक है. स्टेप साइज कैसे कैसे रह सकती है, एक रह सकती है पॉजिटिव, एक रह सकती है नेगेटिव, ठीक है. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. ये काइंड ऑफ सिंटैक्स पकड़ लो, सिंटैक्स. ओके, सिंटैक्स फॉर स्लाइसिंग. ओके, सिंटैक्स फॉर स्लाइसिंग. अगेन, अभी मैंने क्या कहा, बस मैंने जो स्टेप साइज है वो दे दी 1, सो आई गॉट एवरीथिंग, राइट, आई गॉट एवरीथिंग. सो नाउ अगर मैं फिर से ऐसे कर दूं कि मुझे 0th एलिमेंट चाहिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. मुझे 0th एलिमेंट चाहिए एंड देन ओनली थर्ड एलिमेंट चाहिए. इफ आई रन दिस, आई विल गेट these three things. 0th एलिमेंट चाहिए एंड थर्ड एलिमेंट ये नहीं चाहिए, ठीक है. दिस आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट these, so I will get this. Okay, I will get this.
नाउ नाउ सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं 5 डाल दूँ तो क्या आ जाएगा, सारा ही आ जाएगा, राइट? बट व्हाट इफ आई चेंज द स्टेप साइज टू 2? Okay, what if I change the step size to 2? So what will happen is it will kind of uh, change. Now good. So now what will happen? It will jump from first element to directly second element, directly third element, like this. 1, 5, and AI. Right? If I run this, it will be 1, 5, and AI. So step size यहाँ पर क्या है? Step size है 2. Okay, step size है 2. So step size, I think this is also covered in the string, but still we are trying to learn this. Okay. So let me just get you one example. एक एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग देता हूँ आपको, ठीक है? स्ट्रिंग नहीं, लिस्ट देता हूँ. गिव मी ए लॉन्ग लिस्ट. गिव मी ए 10 item list in Python. ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट करवा के ले लेते हैं ChatGPT से. अरे यार, इसने क्या है? एड स्ट्रिंग्स वे. ठीक है, इतना ही लेते हैं अभी के लिए. तो कुछ इस तरीके से इसने दे दिया है. ओके, सही है. तो नाउ हमारे हमारे पास एक स्ट्रिंग मिल चुकी है, एक लिस्ट मिल चुकी है माई लिस्ट नाम से. ओके, कुछ इस तरीके से है. सो अभी क्या करते हैं? देर विल बी ए क्विक असाइनमेंट्स. ठीक है, बहुत क्विक क्विक आपको सॉल्व करनी है. तो गिव मी दिस 4 एलिमेंट्स ओनली अभी के लिए. 1, 0, 1, 2, 3. इतने ही एलिमेंट्स मुझे चाहिए. तो राइट 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 द कोड. Okay, write the code quickly, guys. Write the code. Anyone? I just want these. मैं ये लिस्ट भी दे दूँ कमेंट में तो आपके लिए. अरे कहाँ पे? It will be easier for you. सबको मेरी आवाज आ रही है ना? पता चला आवाज ही नहीं आ रही. ओके, अनुजा से 0 to 4. अगर मैं 4 कर दूं, दिस इज 0 to 4. ये सिंटेक्स गलत है व्यूअर. अदरवाइज 0 to 4 शुड बी राइट. ठीक है, माई लिस्ट हमें यूज करना है बिकॉज हमने माई लिस्ट यूज किया है. 0, 1, 2, 3, 4. ओके, so this one is right. ठीक है, this one is right. This one is right. Okay, now the question is, give me only numbers. Numbers. ओके, नंबर्स क्या क्या दिख रहा है मुझे? 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है. ये लेटर्स है, राइट? these are strings. These are strings. Give me only letter. Give me only numbers. Give me only numbers. This is your next question. Give me only numbers. Quickly. Give me only numbers. My list 0 length and okay, this is nice. Step size 2. This is actually nice. Anyone else? Anyone else? So my question was just different. ठीक है, my question was different. But अगर मैं step size 2 चला दूँ, 0, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, right? So I run this, I will get these numbers. Okay, only numbers. Why? Because I have added only step size equals to 2. Okay, step size equals to 2. So this is how you can do it, guys. ठीक है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा. अदरवाइज लॉजिक तो वही है. ठीक है, इसी को मैं कैसे लिख सकता था? हाउ वुड आई रिटर्न दिस कि मे बी लाइक दिस, लाइक दिस.
This will also give me the same answer, right? This will also give me the same answer. इसके side by side लिख देता हूँ. Okay, so this one is good answer. All right. And ये कैसे निकाल सकते हैं? Now, how will I get only the strings? How will I get only the strings? Only strings. Only strings. This one is wrong. हाँ, ऐसे नहीं होगा. ये क्या रहेगा? 0 स्टार्टिंग इंडेक्स आ जाएगा. 2 विल बी एंड इंडेक्स. 4 विल बी स्टेप साइज एंड 6 8 तो ये तो एरर ही दे देगा. ठीक है. 6 8 तो एरर दे देगा. So what? How can I get only strings now? Strings कैसे ले सकता हूँ भाई? How will I get only strings now? ऐसे क्या करना पड़ेगा मुझे? तो मुझे शायद सिर्फ स्ट्रिंग आएगी. शायद मुझे भी देखना पड़ेगा. गिव मी स्ट्रिंग्स ओनली. ठीक है. गिव मी स्ट्रिंग्स ओनली. अरे इसने क्या दिया? लेंथ ऑफ 1 to 2 टू. हाँ, ये भी चल जाएगा लाइक दिस. तो मैंने क्या कर दिया? व्हाट आई हैव डन इज, अच्छा, यहां से स्टार्ट ना करते हुए यहां से स्टार्ट कर दिया. ओके. वन. वन से स्टार्ट किया. प्रीवियसली वी स्टार्टेड विद जीरो. नाउ इफ आई रन दिस I will only get these strings. Okay, I will only get these strings. Like this you can play around and काफी कुछ इसमें कर सकते हो. ठीक है. So I hope this slicing, अच्छा, someone right, नहीं ये तो सिंपल दे देगा. अच्छा, this one is right. Anuja is again right. This one will give you entire length, entire string ही दे देगा. एंटायर स्ट्रिंग ही दे देगा. इफ यू से स्टेप साइज 2 तो बस नंबर दे देगा. लेकिन इफ यू जस्ट स्टार्ट विथ 1 देन आपको सिर्फ स्ट्रिंग दे देगा. ठीक है. व्हाई? बिकॉज यू स्टार्टेड विथ 2, नॉट 0. 2 मीनिंग ये 1 से. दिस इज जीरो इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स. अगर फर्स्ट इंडेक्स से मिस्टर मारियो को स्टार्ट किया तो इट विल वर्क फ्रॉम जंप टू हियर, देन हियर एंड देन हियर. ओके, लाइक दिस. ओके. So I will delete this one in this case, and this one is both of the right. Okay, both the things are right. Is it clear, guys? Is it clear? हमने बस थोड़ा कुछ डिफरेंट तो नहीं था इसके अंदर. हमने ओके क्लियर. कुछ डिफरेंट तो नहीं था. वी वर जस्ट स्लाइसिंग. इसको प्रैक्टिस करा रहता अगर आपने जिसने किसने स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर ज्यादा मुश्किल ही नहीं आती. ठीक है. सो जस्ट प्रैक्टिस दिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आगे के लेक्चर्स आपके लिए इजी इजी एंड इजी होते जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अदर बाकी किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन गाइस? एनी कंफ्यूजन गाइस? यस नो? यस नो? अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो. ठीक है. So now moving to the next topic, that is checking the items in the list. ठीक है. Checking the item in the list meaning क्या है? कि for example हमारे पास ये list है. थी है whatever. ठीक है. ये list है. This one. So how would I check these things जो भी है इसके अंदर? For example अगर मैं कहता हूँ let's say टू इन माई लिस्ट. ठीक है. इन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ मैं. टू इन माई लिस्ट तो ये कहेगा ट्रू बिकॉज इट इज देयर. राइट. इट इज देयर. राइट. कुछ ये कहाँ पर यूज किया था हमने? इफ एंड एल स्टेटमेंट में. लाइक इफ टू इन माई लिस्ट प्रिंट यस टू इन माई लिस्ट. ठीक है. अगर टू ये स्ट्रिंग मेरे लिस्ट में है तो इट जस्ट प्रिंट दिस वन. राइट. जस्ट प्रिंट दिस वन. एल्स एल्स print no, 2 is not in my list. ठीक है. And like this if and else हमने पढ़ा था. राइट. So
First thing, using in operator, you can check the item from the list. We are checking कि ये element हमारे list के अंदर है या नहीं, ठीक है? Using in operator, okay? Using in operator. Second thing है, second चीज है using for loop, ठीक है? Using for loop, ठीक है? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं using in operator, okay? Using in operator. So using for loop meaning क्या है, ठीक है? So again we will be learning for loop in the future, but बस for the sake of अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे लिस्ट के अंदर के एलिमेंट चेक कर सकते हैं. तो यू विल बी राइटिंग फॉर आई इन माई लिस्ट प्रिंट आई, ठीक है? तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम. तो माई लिस्ट के अंदर के सारे ही एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? माई लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को चेक कर सकता हूँ, ठीक है? लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को चेक कर सकता हूँ. दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड टू चेक द एलिमेंट्स, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड. और इसके अलावा भी काफी है मेथड्स रहती है, जैसे इनुमरेट मेथड भी है, व्हाइल लूप भी रहेगा, फॉर लूप भी रहेगा. बट अभी के लिए ये दो समझ लेना. इन ऑपरेटर जाएगा और इसके अंदर की सारी आइटम्स चेक करेगा, ठीक है? इन ऑपरेट मतलब सारी मीनिंग जो भी आप पूछोगे. जैसे अगर मैंने यहाँ पर कह दिया 3 in my list, so it will say true or false because 3 is not there in my list, right? 3 word is not there in my list, like this, ठीक है? सो कुछ इस तरीके से आप यू विल चेक आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है? वेदर इट इज देयर और नॉट, ठीक है? और ये फॉर लूप को अच्छे से समझेंगे इन कमिंग लेक्चर्स. इस पे शायद 2-3 दिन हम बस फॉर लूप ही सीखेंगे. सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम हियर, नॉट वेस्टिंग मच टाइम हियर. क्विकली आपके लिए ये एग्जांपल कि क्या आएगा इसका आंसर. गिव मी एन आंसर, ठीक है? 3 not in my list. Okay, 3 lot not in my list. Say again. इसको समझाओ. Shall I explain this one again? Miss Shivapriya. Okay. Meanwhile, other students, please let me know इसका आंसर क्या आएगा. 3 not in my list. 3 not in my list. 3 not in my list. What should be the answer? Okay, I will explain. What should be the answer for this? For this. True, true, true. Cool. Yes, it will return true. Okay, it will return true. So coming back to this one again. Okay. Oh, I think true. Yatnesh. Good. 1 is raised to 2. That's one. Okay. So the question was, give me a strings only. Okay. So this was our string, right? This was our string. Oh, sorry, the list. This is our list. It starts with this one, then second is string, then numeric string, numeric string, numeric string, integer string, basically integer string, integer string, integer string. Okay. So the question was, give me strings only. Give me integers. Give me only integers. Okay. So to solve this first issue, okay, to solve this first problem, what we said, give me from 0th index, okay, till the last index, okay, till the last index, meaning give me entire list, okay. If I write here like this, mm, this one like this, so it will give me an entire list, okay. If I add a step size of 2, it will take this first element, then jump here, then jump here, then jump here, then jump here. It will give me numbers. Okay, it will give me numbers. Now coming back to this again, this and this. So again, यहाँ पर this also is exactly similar to this one.
Okay. If I copy this one, I run this one, it is exactly similar. Why? So Python understands if you don't mention anything here, okay, uh, before the first colon, if you don't mention anything, it automatically considers zero. Okay. If you don't mention anything after first colon, it will automatically consider last uh, element. Okay. And it will give you the similar example, similar output. Okay, if I don't mention this and this, it will run the same. Okay. Now coming back again here. So here the question was give me strings only. Okay, give me strings only. So how would I get strings from this? Okay, how would I get strings from this one? So the question was key only give me this string. So the logical answer was if we start with this one, uh, I'm just remembering this. Okay, if we start with this one, what first index, which is our first index two. Okay, so my string would look like this. Okay, 2, 3, 4, and so on. Okay, string integer, right? And now if I add step size equals to 2, what will happen? Our Mr. Mario will jump from 2 to 4, 4 to 6, and it eventually we will get this strings only. Okay, strings only. Again, this and this is equal. Why? One we have mentioned. If I don't mention anything after a colon, it will consider like length of my list and 2 that is already there. So after first colon, if I don't mention anything, this is what it considers. Okay, so if I run this, entirely exactly same things. Okay, this and this exactly same. You can follow this one. That is also fine. Okay, instead of this, you can just take like this. If I do this, I will get 10, and if I just simply add 10 here, this will also works the same. Okay, this will also works the same. Okay, this is 10th of your index. दिस इज 10th ऑफ योर इंडेक्स 10th नहीं है मीनिंग ये 9th है इसके बाद का 10th रहेगा ठीक है लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9th एंड इसके बाद का 10th रहेगा आफ्टर दिस देयर विल बी अ 10th इंडेक्स ओके सो दैट विल गेट sliced out okay that will get sliced out I hope this one is clear or no yes no uh, yes no Miss Shivapriya okay. Length minus one. Okay. So whenever you perform a slice operation, okay. So let's say you have a mm, 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 let's say you have a word, easy words. Let's say you have. Let me connect my mouse. Okay, it's there. Let's say you have a word that is array. Still, my handwriting is not right. Python is your word. Okay, Python is your word. So this is zeroth index, this is first index, second index, third index, fourth index, fifth index. So now, for example, you want only pyth. Okay, this is what you want only. Okay, pyth you want. So you will say zero. Just start with zero. Then there will be a colon, and then instead of mentioning this three, you will mention four. Okay, you will mention four like this. So this will give you pyth. Okay. So if I wanted only pyt, so I would have mentioned 0 is to 3. Okay. I would have mentioned h index. Okay. So how do I how do I understand this? So if I mention 4, so basically there will be a scissor and it will cut down the fourth element. So O will be cut down and I will just get pyth like this.
So it is not like length minus one. It is like length, only length, not minus one. Okay, not minus one. So since we are starting the indexing from zero, right? Uh, this is zeroth index, right? ये zeroth पे है. This is first है, second है, third है. But if I and this is fifth, right? But if I count the length, I should get the length is equals to six. Okay, length is equals to six because these are six elements. ये three and ये three. Okay. Maybe I am making you confused again. But to understand this, whenever let's say like keep it in three different understanding. First is ये मेरा this is my positive indexing. What? This is my zeroth index, first index, third index, and ninth index. Okay. If I this is my first understanding. Okay, this is my first understanding. Now, if I want to know, if I want to slice the things. Okay, if I only want these four. Okay, if I only want these four, I will say, I think I have explained this one. Okay, यहाँ पर यहाँ पर. So this is my list. Okay, I only want this first three elements. So what I have done is zeroth index. Give me this. The starting point is zeroth index, and the end point. So I only wanted this, right? So I would say zero, first, second, and this is third. Rajat is third. So if I mention three, then it will slice. There will be a scissor. It will cut Rajat down and only give me this. Like imagine a scissor coming here and cutting this list into two pieces. This is first piece. This is second piece, and you just want this one. So if you would have mentioned this, Yuki, you wanted this one, right? One, three, five. But if you would have mentioned this one, but that Caesar would have cut this down, then you would have only got one and three. Imagine imagine a Caesar there. Okay. And the third thing is just understand this will just give you the length of the list. Okay. This will only give you the length of the list. So I think I made it a little clear now. Yes, no? Yes, no? Okay, cool. Going going ahead now, checking items is done. Let's understand one function that is range function. Okay, range function. So we will be learning functions here henceforth. List के अंदर इतनी ही चीजें थी. Okay, there were only these many things. Okay, yesterday we saw some theory, and today we saw some indexing and slicing. Okay, now let's understand the functions in the list. So the very first function that we are going to understand is a range function. Okay, is a range function. So this, if you just go range, not like this, if you say list of range of, for example, 10. Okay, list of range of 10. So if I run this, I will get a list automatically from 0 to 9, meaning this is the length of the list. Length is 10, right? Length is 10. अगर मैं इसको if I just list one equals to this one, and if I say list one, I will get this. But again, length of list one will be 10, right? So that's how the range function works. So range function is used to create a list. Okay, create a list. ऐसे समझ लेते हैं अभी के लिए. One more example of a list range function is, let's say, list of a range of, give me a number from 0 to 5. Okay, 0 to 5. I run this, I will get from 0 to 5. 5 meaning this is a last index. Okay, this is not a number. Okay, this is the last index. This is also index. This is also index. Okay, one more example I will give you. List of range of, give me a number from 1 to 10. Give me a list of 1 to 10. So this is a 0. This is the starting index or starting element,
and this is the last index. So if I run this, I will get 1, 2, 3 till 9. Okay, 1, 2, 3 till 9. Again, here one more example with a step size. Okay, with a step size of 2. Okay, so if I mention a step size of 1, I will get similar example because Mario would have jumped on the same number, but now it will jump on different numbers. Okay, the second number every time, like 1, 3, and so on. Okay, 1, 3, and so on. If I again give you one more example of, for example, 3. So now 1, I think 4, and then 7, like this. Okay, so a range function is used to generate a list of not really random numbers, but some numbers. Okay, so you will probably need these numbers. So can we do it for negative indexing also? Let's say, let's try. Okay, list of range of, for example, give me from -1 to -5 index. Okay, and reverse it. Okay, reverse it. So it should give me 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Like it. Some more example. You can create actually very big lists also. Let's say, actually this is used for creating a big list only. Let's say 1 to 100, give me, or 1000 also. You can see you got 100 length of elements. Okay, okay. You can also add step size equals to 3, so it will just little bit shrink down. Or maybe step size of 5 would be okay enough. Okay, 1 to 100 element and step size is 5. So it will jump from uh, every 5 element. Okay, you can also see from 0 to 5. So you will get the 5 ka table, right? You will get the 5 ka table like this. So this is how you can make a use of a range function, guys. Okay, this is how you can make a use of a range function. So can you now, so have you got this or not? And if you got this, can you create one thing? Create. So give me a list of um even numbers. Give me a list of even numbers. Okay, give me a list of even numbers. Think how we can do it. Is it called slicing? Someone a key says, is it called slicing? I don't know whether it is called slicing or not, but I call it slicing. Let's see whether I am wrong or right. Uh, what is called slicing? Slicing, slicing in this. Give me example. Yes, this is called slicing. This is called slicing. Has anyone tried this? Give me a list of even numbers using range function. Using range function. Using range function. Give it a try. सोचो कि कैसे हो सकता है. I will give you 130 seconds now. I think this is enough. Range function कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ. Okay. Hmm. 12, 11, 10 seconds guys. सोचो सोचो कैसे हो सकता है. Even numbers अगर मुझे चाहिए. Okay. Let me just give you one example. So if I say list of a range of 0 to 10 and step size 2 दे दो. Maybe 0 will be there, but even numbers will be, right? There will be all even numbers. Like 0 is not even number, but all are even numbers. Okay? All are even numbers. So maybe you can start with 2. So all numbers are even numbers now. Okay?
All numbers are even numbers now, like this. चलो थोड़ा सा बड़ा कर दो. So all numbers are even numbers. Okay. Second question, guys. Quick question. Okay. Someone tried. मेरे को late message आ रहा है क्या? This is right. This is not right. This is not right. Second question. Give me a list of odd numbers. Quick. Give me a list of odd numbers. Again, you get only 30 seconds. Again, you only get 30 seconds. List of odd numbers. Quickly, guys. We also have to cover two more functions. Time's up. This is wrong. This is wrong. This is both are wrong. Anyone else? Anyone else? This is right. Okay, this is right. So if I run this, it will start from 1 now. Okay, it will start from 1 to 3. For my convenience, I'm just taking 20. Okay. It will start from 1, then it will jump to directly 3, 5 and so on. Okay. Now you can create like this. So why this is odd? क्योंकि start 1 से करो. यहाँ पे start 2 से करोगे तो सारे even आएगा, right? 2 का तो ही table है, right? It is jumping from the on every third number. Okay, like this. So cool. I think that is clear. सबको range function समझ में आ रहा है. अच्छा range में ही किया था ना. हाँ, list of range. बढ़िया भाई बढ़िया. यहाँ पर I think square braces मैं नहीं यूज कर रहा हूँ ना. I'm using round braces. Round braces यूज करो guys. ठीक है. Square braces नहीं, round braces. Like parenthesis. Round braces. I'm not using square braces. Okay, so let's understand. I wanted to explain two more append and extend. Let me explain you some simple since we have only 9 minutes. Okay, so let's understand index function. Okay, let's understand index function. So you had this. अच्छा ठीक है पहले एक एग्जांपल देता हूँ मैं age equals to let's say someone is 23, 24, 24, 26, 27, 65, 21. So these are age numbers. Okay, age numbers. So there is this max function is also there, guys. Okay, okay, max function. Agar if I want max age, okay, if I want max age, I will get 65 is your max age. But can you tell me what is the index of that max age? Okay, can you tell me what is the index of that max age? Meaning मैं ऐसे पढ़ के तो बता सकता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ इंडेक्स है भाई ठीक है but what if you have thousands of records? What if you have thousands of numbers, lakhs of millions of numbers? Then it will be difficult, right? So here index function comes in. So we'll say age dot index dot max of age. So if I return this, I will get 5. Okay, I will get 5 like this. You can also say age dot index. Index के अंदर मुझे दे तो जो 21 है जिसका भी 21 एज है उसका इंडेक्स क्या है उसका इंडेक्स 6 है okay his index is 6 okay his index is 6 but what if अगर मैं 24 का मांगू तो क्या होगा what will happen if I ask for 24 24 it is saying 1 okay it is saying 1 but we have one more 24 okay we have one more 24 so what about that then you just have to mention comma 2 it should give you the other index as well ठीक है
क्या ये और एक के लिए वर्क करेगा क्या? लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, तो if I do here 3, yes, okay, so it will find the third element, which is this one, उसका इंडेक्स है 7, right? 7. So isn't it now easy to find the index? Okay, uh, create a list of, अच्छा एक काम करते हैं, रेंज फंक्शन से लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्यों चैट शिफ्टी को परेशान करना। ठीक है, let's say I'm creating list 1 is equals to list of a range of 1 से स्टार्ट कर दो, 200 एलिमेंट्स दे दो। ठीक है, ऐसे ऐसे में मेरे को ये दे दो बस। ठीक है, अभी वो है यहाँ पर। ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ये हाइड कर दे रहा हूँ, लिस्ट 1 के अंदर सारे एलिमेंट्स। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अभी मैं ये सब गिनते नहीं बैठूंगा ना, अगर मैं किसी को बोलूँ कि इसका इंडेक्स बताओ, ठीक है, सो समवन विल बी लाइक अभी मैं क्या ये गिनते बैठूं? ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू से list1 डॉट इंडेक्स ऑफ 156 बोला था शायद मैंने, राइट? तो उसका इंडेक्स है 155। ठीक है, उसका इंडेक्स है 155। Isn't it very cool that you are getting the index of whatever the element that you want, right? Whatever the element that you want. Cool. One more example, one more function. I think this should be okay. This should be clear to everyone क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, but I will explain one more function and then दोनों का भी practice करते हैं। ठीक है, दोनों का ही practice करते हैं। Kind of a थोड़ा बहुत similar सा है, उसका नाम है insert function। ठीक है, insert function, what insert function do is it adds the element it adds the element at your whichever location you mention। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है व्हाट्स द सिंटैक्स, फॉर एग्जांपल यू विल से insert। ठीक है, उसके अंदर यू विल define the index and comma देकर you will define whatever value that you want to insert। ठीक है, whatever value that you want to insert, इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं अभी। ठीक है, let me just create a list lst equals to this one and for example कहीं से लिस्ट उठाना पड़ेगा। यही है क्या हमारे पास? चलो कुछ सिटीज के नाम कहते हैं। आई नीड पुणे, आई एम इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। ठीक है, so if I run this it will look like this। so now so now let's say these are someone's pasandita list of cities। I like Pune very much, then second most is Mumbai, third most Delhi, fourth most is Chennai। For example, my priorities have changed. I want something at location 2, that is Bangalore। Okay, so I will say list dot insert, okay, list dot insert. Then at which index? This is 0, right? At first index. At first index. Add what? Add what? Add Bangalore। Okay, BLR मैं बोल रहा हूँ। So if I run this, and now if I ask list, I should get BLR at my first index, right? Zeroth index, first index. Okay, zeroth index, first index. Isn't it easy? Right? Now, for example, Chennai is fourth, right? What if I want to add something at the very last? At the very last, let me just check अगर ये last में add होता है नहीं। So if I say -1, and instead of this, what if I say Kolkata? Okay, Kolkata। And if I ask for a list, so will I get? अच्छा यहाँ पर आ रहा है। So maybe you have to in order to add, you need to say length of LST। Yes, now it is getting added at the last। Okay, okay. All right, so you can also add at the using the negative indexing, using the positive indexing, and using this
length of something also. Okay, we can also add using the length. So I hope this index and insert both are both functions are clear. Have you got this? If you have got this, type GT in the comments. If you have got this, type GT in the comments. Anyone? तो किसी को ही नहीं समझा क्या? Anyone? Okay. GT. GT meaning got it. Got got it. ऐसे कुछ. ठीक है? If you have got this, let's do some question and answer. ठीक है? Let's do some question and answer. So instead of question and answer, can anyone explain this one in English? Of course. Can anyone explain this one? Or open your mic and just explain this index function. Anyone? 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 We need to be brave little bit because इंटरव्यू में तो हमको प्रैक्टिस करना ही होगा. Can anyone explain me insert and so insert या index anything explain me anything anyone mic निकालो mic unmute yourself come front प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम just explain me बस I'm your student या फिर I'm your friend and you just have to explain or explain others quickly guys quickly you need to close the session. Okay, someone trying? Anyone? आवाज आया था मुझे. कल से क्लास में ही नहीं आएंगे यार. ये बंदा तो डायरेक्टली पूछता है क्या क्या मतलब माइक ऑन करके पूछो. तो सिंपल है राइट. मैं फिर से बताता हूँ. इंडेक्स फंक्शन है. सो व्हाट यू हैव टू से कि चलो इंडेक्स फंक्शन क्या देगा. इट विल गिव यू ये इंडेक्स देगा. सबसे पहले जो भी एलिमेंट रहेगा लिस्ट के अंदर उसका इंडेक्स देगा. ठीक है. सो कैसे हमें इंडेक्स पता चल सकता है. वो एलिमेंट डायरेक्टली ऐड कर दो. So I will say age is my list. Okay. Then this index function I will use age dot index and whatever whichever function whichever items or elements index I want I will just mention that. Okay, I will just mention. So एक example दे दूं क्या आपको फिर से. एक list देता हूँ list 2 equals to नहीं range function नहीं यूज करेंगे. list 2 की जगह पे मैं कहूँगा सुपर हीरोज. ठीक है. सुपर हीरोज क्या हमें एआई देगा. दे दो यार. नहीं दे रहा. Generate a list of superheroes in string length should be 10. देखते हैं. Let's see whether it gives or not. और कुछ तो दे दिया. चलो यही उठा देते हैं. ठीक है. So this is our list. Okay, this is our list. Now my superhero are these men. Okay. So how can I get ये मैं आपको डाल रहा हूँ आपके कमेंट सेक्शन में. नाउ बहुत सारे आ गए. सो टेल मी हाउ कैन आई गेट द लिस्ट ऑफ ग्रीन लैंटर्न और एक्वामैन. हाउ कैन आई गेट द लिस्ट और इंडेक्स ऑफ एक्वामैन. एक्वामैन का इंडेक्स बताओ मुझे कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथन. एनीवन क्विकली गाइस. वी आर ओवर टाइम नाउ. Superhero underscore names dot index Aquaman. Okay. Anyone else? Anyone else?
Okay, similar. Okay, so this is actually right. This is right, right? What if Aquaman at 4? ठीक है. What if मेरा जो फेवरेट है, ये तो दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, जो सबसे ज्यादा फेवरेट है, ठीक है, हु इज सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा, या फिर आपका जो भी सबसे ज्यादा फेवरेट है, हाउ कैन आई ऐड एट द इंडेक्स ऑफ जीरो, क्योंकि मुझे सबसे आगे, अच्छा वैसे नहीं बोलता, आई वॉन्ट टू ऐड ए माई माई फेवरेट सुपर हीरो at the start of the list. Okay, how can I add? So give me a function, give me a Python code to add a add my superhero at the very start of the list. कैसे कर सकता हूँ मैं? Okay, ethnic face, अच्छा Luffy भाई से insert one. One will not be the starting point, guys. And but yeah, sorry, zero. Yes, zero is a right answer. This is also a right answer. बस यहाँ पर थोड़ा सा दिस वन सोरो, बस हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज दिस, राइट, इसको हमें स्ट्रिंग में ऐड करना है, राइट. नाउ इफ आई रन दिस एंड इफ आई आस्क सुपर हीरो नेम्स, I will get Zoro at the top. Okay, so इसको string में ऐड करो. So that is about it. I quickly एक आपको recap दे देता हूँ. So indexing in the list, meaning this is our zeroth element, first element, second element. ये हो गया हमारा positive indexing, right? This is the example of negative index, right? How? This is -1, -2, -3, -4 and so on. देन हमने देखा स्लाइसिंग. स्लाइसिंग में ये हमारा सिंटैक्स है, क्या रहेगा. सो फॉर एग्जांपल ये आपका लिस्ट है, लिस्ट वन. सो यू विल मेंशन अ लिस्ट वन हियर पर. देन हियर यू विल मेंशन अ स्टार्टिंग इंडेक्स. ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ इस तरीके से 0 वट एवर. देन एंड इंडेक्स बोलने से अच्छा है हम बोलेंगे एंड इंडेक्स प्लस वन. ठीक है, हाँ प्लस वन. आई थिंक शिव प्रिया वुड मेक मोर सेंस ना. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए, राइट, 5 चाहिए था. तो क्या करूंगा मैं, 0 1 2, राइट. सो आई विल से 2 + 1 मीनिंग 3, राइट. यहाँ पर आएगा 3. तो आई विल गेट दिस. ओके. कैसे भी इसको ध्यान में रखो, बट इसको ध्यान में रखो. एंड देन देयर विल बी अ लास्ट थिंग इज स्टेप साइज. इट कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके. So here are some example with everything, starting index, end index, plus one पकड़ लो, yeah, step with step size. So if I mention step size equals to 2, it will jump to every two numbers. If step size equals to 3, it will jump to every third number, right? Then we have seen how to check items in the list. So very first is using in operator. ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, राइट, बहुत बार, कि इन की जो आपका लिस्ट है उसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे चेक करोगे. ठीक है, यू विल से यूजिंग इन ऑपरेटर और फॉर लूप. ठीक है, ये इफ लूप, इफ इफ एल्स में भी हो जाता है, या फॉर लूप में भी हो जाता है. ठीक है, फॉर लूप, सो इसको अच्छे से समझेंगे, सो वरी नॉट. ठीक है. देन वी हैव सीन रेंज. किस लिए रेंज यूज करा जाता है, टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. मोस्टली नंबर्स ही होता है, ठीक है गाइस, नंबर्स ही क्रिएट होता है इसके अंदर. देन इट ऑल्सो हैव स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स एंड स्टेप साइज ऑल्सो. ठीक है, सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट लर्न अबव. Then we have seen index function and insert function. Index function and insert function. ये मैं अभी यहीं पे रखता हूँ. Hmm, इसको समझो, ठीक है. और ये भी देखो कि मैं कोड कैसे जनरेट कर रहा हूँ. ठीक है, कैसे कैसे जनरेट करा मैंने कोड. आई जस्ट ओपन अ न्यू न्यू यहाँ पर दे रहा है जनरेट करो, और आप यहाँ पर बता दो उसको कि कुछ ऐसा जनरेट कर दो. ठीक है. सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समवेयर कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
तो यू कैन आस्क, ठीक है, इसको चैट जीपीटी या मतलब जो भी एआई है इसके अंदर। ये और भी होता था यार, यहाँ पर एक्सप्लेन कोड अगर कर दोगे तो ये एक्सप्लेन भी कर देगा साइड में। ओके, सो इट विल जस्ट एक्सप्लेन कि अच्छा यू आर यूजिंग इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट मेथड टू ऐड एलिमेंट इन पाइथन लिस्ट। और फिर ये एक्सप्लेन करेगा इंसर्ट क्या एक्सप्लेन करेगा, जीरो इंडेक्स एक्सप्लेन करेगा, जीरो इज योर सेकेंड आर्ग्यूमेंट वो बताएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो हाउ आई केम हियर, मैंने बस जो भी मेरा कोड था, फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा कोड है दिस वन, सो इफ आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक एंड एक्सप्लेन कोड अगर मैं बोल दूं, इट विल जस्ट एक्सप्लेन मी वट एवर द कोड इज देयर। ठीक है, पूरा ही एक्सप्लेन कर देगा ये। सो दिस इज ऑल्सो इजी, राइट, मेरा जरूरत नहीं है। But if you still have any questions, you can just ask me. Okay, that's always my uh, doors are always open. Okay, I think this everything is clear. Any questions? Any questions? Questions? Opening window for questions. Any questions, guys? If you have any question, let me know. Otherwise, if you have understood everything, type win in the comments. Cool, win. बढ़िया, win, win. Okay, and no questions, guys. कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन। अंडरस्टूड, कूल। ऑलराइट, सो दैट इज फॉर टुडे। कल फिर से मिलते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, विवेक, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बताओ यार, ठीक है। लेट्स लेट्स टॉक आउट एंड समझ में आना चाहिए हमको। कुछ छूट गया ना तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ छूट गया और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कैसे सॉलिड होगी, बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग यू विल गेट द नोट्स हियर। ठीक है, ये लिस्ट फंक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिस्ट फंक्शन 3 में शायद नहीं मिलेंगे, बट लिस्ट फंक्शन 2 में मिल जाना चाहिए। ठीक है, लिस्ट फंक्शन 2 के अंदर हम लिस्ट फंक्शन 1 में मिलेंगे शायद। कहाँ पर है लिस्ट फंक्शन 1? ठीक है, सो गो थ्रू दिस नोट्स, या फिर आई विल एनीवे आई विल ड्रॉप दिस इन द, यहाँ पर मिलेंगे एक्सटेंड इधर 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 इंसर्ट फंक्शन and index function in the list. Okay, some different examples are here, but you will understand. Okay, and anyway, I will drop this in the group, WhatsApp group. All right. So मिलते हैं कल, और किसी को कुछ भी डाउट है जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और ग्रुप, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट गाइस, टुमारो इज हॉलीडे, संडे को ऑफ रहेगा। संडे को ऑफ, संडे को मॉर्निंग इवनिंग बैच ऑफ। I need some rest. But still, if you have any questions, you can contact me, DM me, or call me. Okay. So see you tomorrow. Happy weekend. Practice karo, and you need to complete the assignment. You need to complete the assignment. ठीक है? Everyone, ध्यान में रखना, आपको assignment complete करनी है. Okay. And people on the YouTube, YouTube कहाँ पर है? People on the YouTube, if you want to join the WhatsApp group, आपको उसका link description में मिल जाएगा, या फिर you will find it here. ओके, चलो गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय। व्हाट्स असाइनमेंट? कूल, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट असाइनमेंट। सो मैं आई हैव एडेड एन असाइनमेंट्स लिंक इन द ग्रुप हियर समवेयर। ठीक है, दिस वन। ठीक है, असाइनमेंट वन, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट फ्रॉम गिटहब। you'll just have to go to this github जो link I always share in the group. Here you will find an assignment folder and the first assignment. ठीक है, that this should be completed by Monday, meaning you only have tomorrow's day. ठीक है, send the link please. Yes, I will send you. This one, just you can get this, or you still have in the group. I think you are in the group, right, Shiva Priya? You're already in the group. Yes, no? Yes, cool. Okay. You will get it here from there also. And try. I think you are just you are there. I think in almost lecture. So just keep it up. Every हर एक lecture को आओ. ठीक है.
Okay, guys, bye bye, and have a great weekend, Sunday, holiday, and practice, guys. Bye bye. भाई कहाँ से हो? अभिषेक सेस कहाँ से हो? भाई मैं मुंबई से हूँ। मुंबई पुणे, यही कहीं से। मतलब मुंबई पुणे आने जाते रहता हूँ मैं। मुंबई पुणे, मुंबई में घर है, पुणे में घर है। ओके, मिलते हैं भाई अभिषेक भाई, इफ यू वांट टू